outset, I extend my hearty thanks to Kerala Ministry of Panchayati Raj and all the officials and people coming from all the states for participating in this wonderful conference. और जो कल की जो कवायद हुई है, जो कल आई थिंक दैट वाज अ वेरी गुड लर्निंग एक्सपीरियंस। सो उससे आगे बढ़ते हुए आज हम लोग आज का सेशन शुरू करेंगे और अभी 2-3 सेशन है, पैनल डिस्कशन है, और भी अच्छे थीमों पे आपको अभी वीडियो दिखाएंगे और जो उनके रिप्रेजेंटेटिव है वो डिस्कशन करेंगे। लेकिन उसके पहले हम लोग जो अभी तक काहे कि अल्टीमेटली ये जो LSDG है, जो हम लोग जिसकी चर्चा लास्ट 1 साल से कर रहे हैं, तो पंचायत लेवल तक उसकी पहुँच होनी चाहिए और उसकी पहुँच का एक बहुत इम्पोर्टेंट हम लोगों ने ज़रिया जो किया था कि इस बार जो अवार्ड की जो कंपटीशन होगी, जो हर एक साल हम नेशनल पंचायत अवार्ड करते हैं, वो थीमेटिक हो। सो दिस ईयर अनलाइक लास्ट ईयर्स, previous years the awards were on various issues but not thematic. So this year the award was constituted on the 9 themes of LSDG. So जैसे कि poverty free है, healthy village है, so on all those themes we constituted the awards. And this year there was also there are two changes. One, the awards was thematic, and number two, it was compulsory and mandatory for all the panchayats to टू पार्टिसिपेट। और उसके लिए जैसे आप लोगों को पता होगा, हमने दिल्ली में पहले एक कार्यशाला रखी थी और उस कार्यशाला के बाद स्टेट में हम लोगों ने जो ओरिएंटेशन करवाया, स्टेट लेवल ऑफिसर्स का, डिस्ट्रिक्ट लेवल ऑफिसर्स का ओरिएंटेशन करवाया और उसके बाद से पंचायतों को जो हैंड होल्डिंग सपोर्ट जो ब्लॉक ऑफिसर से दी गई और फिर हमने अपनी पोर्टल, अवार्ड की पोर्टल जो खोली और इस तरह से हमने वीक का टारगेट रखा था कि जो पोर्टल हमने जो 5% 15% करते हुए हमने करीब 1.5 महीने का पोर्टल खोला और हमने टारगेट रखा था कि 100% हम पहुंच जाएंगे 15 नवंबर तक। एंड बहुत खुशी की बात है, इट्स अ मैटर ऑफ ग्रेट सेटिस्फैक्शन फॉर ऑल ऑफ अस एंड आई मस्ट कंग्रेचुलेट ऑल ऑफ यू। इट इज़ बिकॉज ऑफ योर हार्ड एफर्ट्स दैट वी कुड रीच 90%। तो अभी तक आई थिंक इस पर ताली जरूर बजनी चाहिए कि इतनी बड़ी एफर्ट कभी नहीं हुई थी। अभी तक हम लोग केवल 20,000 25,000 पंचायतों में पहुंच पाते थे। अभी ऑलरेडी हम लोग 2,40,000 पंचायतों में अवार्ड की कंपटीशन हो चुकी है। और नेक्स्ट स्लाइड हम जब जाएंगे तो आप देखेंगे कि बहुत सारे स्टेट ने 100%, तो मोस्ट ऑफ द स्टेट्स, कम से कम 20-25 स्टेट ने 100% मैंने ये पंचायतों ने पूरी की है। तो मैं उन पंचायतों को जो आप लोग यहाँ पे उपस्थित हैं, मैं उन आप लोगों को फ्रॉम बॉटम ऑफ माई हार्ट आई शुड थैंक यू कि आप लोगों ने 2 महीने में इतनी अच्छी मेहनत करके इस लेवल पे पहुँचे हैं। और कुछ स्टेट, दो चार स्टेट पीछे रह गए हैं, मेरी उनसे अनुरोध है कि उस पर फिर भी वो ध्यान दें और वो आगे बढ़ाएंगे तो हम उनको फिर से अपॉर्चुनिटी देंगे। तो इस तरह से आप देखें कि ऑलरेडी हम करीब 2,40,000 पंचायतों में अवार्ड की कर चुके हैं। अब इसके बाद जो प्रोसेस हमारा है, प्लीज़ नेक्स्ट। इसके बाद प्रोसेस ये है कि इस बार की अवार्ड जो है वो एक और चेंज हुआ है कि इस बार ब्लॉक लेवल भी अवार्ड है, डिस्ट्रिक्ट लेवल भी अवार्ड है, नेशनल लेवल भी, स्टेट लेवल भी है और नेशनल लेवल अवार्ड है। सो ब्लॉक लेवल से जो फिल्टर होकर पंचायत आएंगे वो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे आएंगे, डिस्ट्रिक्ट लेवल से फिल्टर होकर जो स्टेट लेवल पे आएंगे और फिर स्टेट लेवल से फिल्टर होकर नेशनल लेवल पे आएंगे। सो अभी हम लोग का अभी जो अगले 15 दिसंबर तक अभी वी आर कॉन्सेंट्रेटिंग ऑन द ब्लॉक लेवल सिलेक्शन। सो उस पर मैं ऑलरेडी एक VC कर चुका हूँ आप लोगों के साथ, और जो ब्लॉक की कमेटी आप लोगों की बनी हुई है वो प्रोसेस भी अभी पोर्टल ओपन हो गया है और उस पोर्टल पे ऑलरेडी ब्लॉक लेवल, आप जिन पंचायतों की आज लास्ट डेट है कंप्लीट हो जाएगी तो कंप्यूटर से ही ब्लॉक लेवल का जो रैंकिंग जनरेट हो जाएगा। और जो ब्लॉक लेवल सिलेक्शन कमेटी का रिस्पॉन्सिबिलिटी ये रहेगा कि जो टॉप 3 पंचायत प्रत्येक थीम में, ऑन एवरी थीम, उनकी वो डाटा वेरीफाई करेंगे। सो इसके लिए हमने 1 महीने का टाइम रखा है कि दैट शुड बी वेरीफाइड एंड सेटिस्फाइड कि ये जो पंचायतों ने फिलअप की है हर एक थीम पे, वो जो टॉप 3 पंचायत आ रहे हैं ब्लॉक लेवल पे वो ठीक हैं। तो ये 15 दिसंबर तक ये चलेगा और 15 दिसंबर के बाद फिर ब्लॉक लेवल से जो हर एक ब्लॉक से हर एक थीम में 3-3 पंचायत आगे बढ़ेंगे, वो डिस्ट्रिक्ट लेवल एंड देन स्टेट लेवल। सो एवरी वी आर कीपिंग 1 मंथ एट ईच लेवल। So we are now concentrating only on the block level award. So till 15 December, our whole team of the Panchayat are continuously interacting और उसमें जहाँ भी आपको सपोर्ट की ज़रूरत पड़े आप हमारे साथ ईमेल करें, व्हाट्सएप ग्रुप है, हमारे एक एक कंसल्टेंट हर एक स्टेट लगे हुए हैं, उनको करें। और ये जो ब्लॉक लेवल जो कमेटी इस पे इस तरह से फॉर्मेट फिलअप करके
पोर्टल पे ही अपलोड करेगी। वो हर एक पंचायत के लिए जो टॉप 3 पंचायत का होगा, जो पंचायत 1, 2, 3 बने हैं, उनके डाटा वेरीफाई होगी और तभी अपलोड होगी। क्या है कि हम लोग यहाँ से वेरीफाई नहीं कर पाएँगे, तो इसलिए वी हैव फुल ट्रस्ट ऑन द ब्लॉक लेवल कमिटी और इस तरह से हमारा सारा कार्यक्रम आगे बढ़ेगा और उस तरह से जो टॉप 3 पंचायत आते जाएँगे, वो आगे निकलते जाएँगे और कंप्लीट ये प्रोसेस हम 15 दिसंबर तक चलाएँगे और ये सब इसी फॉर्मेट में जो ब्लॉक कमिटी को अपलोड करनी है। तो और इसमें एक रिक्वेस्ट हमारी ये भी है कि हर एक स्टेट जब ब्लॉक लेवल अवार्ड दें, तो आप एक अच्छा फंक्शन ऑर्गेनाइज करें पंचायतों में। आप वहाँ के जो डिस्टिंग्विश्ड एमएलए हैं, चाहे डिस्टिंग्विश्ड कोई भी वहाँ के चीफ गेस्ट हैं, उनको बुलाइए। उसी तरह से डिस्ट्रिक्ट लेवल अवार्ड भी एक मेजर समारोह कीजिए, स्टेट लेवल का भी आप मेगा समारोह कीजिए, तो इसकी विजिबिलिटी बढ़नी पड़ेगी। वी हैव टू जस्ट केवल वहाँ पे अवार्ड दे देने से नहीं होगा, उसकी विजिबिलिटी आपको बढ़ानी पड़ेगी सो दैट इसका जितना अवेयरनेस, द मोर एंड मोर पीपल शुड बी अवेयर दैट दीज पंचायत हैव बीन अवार्डेड एट द ब्लॉक लेवल। सो इससे आप समझ सकते हैं कि अगर हमारे 7,000 ब्लॉक हैं और 3 पंचायतों को मिल रहा है और 27, तो ऐसे करीब 1.5 लाख अवार्ड होंगे। तो इस बार अवार्डों की संख्या बहुत हो रही है और उनको सर्टिफिकेट का भी हम डिज़ाइन करके आपको भेजेंगे। आपको सर्टिफिकेट भी डिज़ाइन मिलेगी वहाँ पे और उसी डिज़ाइन पे आप उनको सर्टिफिकेट देंगे और कैश अवार्ड अगर स्टेट देना चाहे तो ब्लॉक लेवल, डिस्ट्रिक्ट लेवल और स्टेट लेवल अवार्डी को आप उनको कैश अवार्ड भी दे सकते हैं। तो इस तरह से हम लोग ये सारा कार्यक्रम 15 फरवरी तक ख़त्म कर देंगे और 15 फरवरी से 15 मार्च तक हमारा नेशनल लेवल अवार्ड का सिलेक्शन चलेगा एंड 24 अप्रैल को फिर इसका प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, चाहे प्राइम मिनिस्टर के थ्रू हम लोग उसका अवार्ड करेंगे। तो अगर जो भी हेल्प चाहिए उसका आपको हेल्प दिया जाएगा। थैंक यू वेरी मच। दूसरा है जो अब हम लोग इसी पैटर्न पे, प्लीज़ अपलोड द नेक्स्ट कोड, जो जीपीडीपी का कार्यक्रम चल रहा है, तो वो भी रिवैम्प्ड जीपीडीपी बना है, तो इसी थीम पे, तो जो हम लोग को यहाँ सिलेक्शन मिली है अवार्ड से, उसी पैटर्न पे अब हम लोग जीपीडीपी का भी कर रहे हैं बिकॉज आपको इसमें काफ़ी नॉलेज आ गया है अब। तो इस बार की जो जीपीडीपी जो है वो भी थीमेटिक है, तो जैसे अवार्ड थीमेटिक था, जीपीडीपी भी थीमेटिक है ना। प्लीज़ अपलोड द पोर्टल ना। ओके, तो इसमें जो है तो इस बार हम लोग, जो मैं एक चीज़ बता दूं कि हम लोग बहुत हड़बड़ी में नहीं है। वी आर नॉट इन हरी टू प्रिपेयर जीपीडीपी। जस्ट लाइक इन द पंचायत अवार्ड, वी फॉलोड द प्रोसेस फॉर 2-3 months, 3-4 months and then started filling up the questionnaire on the same pattern. We will first spend lot of time on the process, maybe November, December, even January. And once we are satisfied that the states are ready to fill the portal, then only we will start the portal, because preparing GPDP won't take more than 5-10 days, but we will not short circuit the process, है ना। तो उसमें, तो उसके लिए जो अब, तो जो हमारी एक, आपको याद होगा हम लोगों ने कार्यशाला रखी थी दिल्ली में अक्टूबर महीने में, और उसके बाद से हम लोगों ने ये टाइमलाइन दिया था कि दिल्ली की कार्यशाला के बाद जो स्टेट्स हैं, वो स्टेट लेवल ऑफिशियल्स और डिस्ट्रिक्ट लेवल ऑफिशियल, जो थीमेटिक ऑफिशियल्स हैं, उनका ओरिएंटेशन कराएं। उनकी भी टाइमलाइन दी थी हमने। और स्टेट लेवल, डिस्ट्रिक्ट लेवल ऑफिशियल्स की ओरिएंटेशन होने पे, दोज डिस्ट्रिक्ट लेवल ऑफिशियल्स विल ओरिएंट द ब्लॉक लेवल ऑफिशियल्स, उसका भी टाइमलाइन हमने दिया था और टाइमलाइन आगे बढ़ेगा, क्योंकि इसमें नहीं हुआ ज़्यादा काम। और ये जो ब्लॉक लेवल ऑफिशियल थीमेटिक हैं, दे विल एक्चुअली प्रोवाइड हैंड होल्डिंग सपोर्ट टू द पंचायत इन प्रिपेयरिंग द थीमेटिक जीपीडीपी, है ना। तो इसमें जो सबसे पहला रिक्वायरमेंट जो जीपीडीपी पोर्टल खुलने का है, वो ये है कि पहले आपके पंचायतों ने जो संकल्प, एक या थीम या 2 थीम पे, मैक्सिमम 2 थीम पे ही लीजिए, काहे कि उससे ज़्यादा आप लोग कर नहीं पाएंगे, पे जो संकल्प लिया है उसकी ग्राम सभा की अनुमोदन करवानी है आपको, है ना। तो काहे कि अभी ग्राम सभा के अनुमोदन नॉट मच, ओनली आई थिंक 1 लाख पंचायत हैव टेकन ग्राम सभा अनुमोदन। सो फर्स्ट यू हैव टू डू दैट प्रोसेस इन नेक्स्ट 1 month, एंड दिस इज द प्रेजेंट स्टेटस ऑफ द संकल्प, जो आपको हम दिखा रहे हैं कि हेल्दी विलेज पे 57% पंचायतों ने संकल्प ले रखा है और वाटर सफिशिएंट पे 41%। तो इस तरह से करीब करीब हमारे जो 4 मेजर थीम है वो पोवर्टी पे हैं, हेल्दी विलेज पे हैं, चाइल्ड फ्रेंडली पे हैं, वाटर सफिशिएंट पे हैं, क्लीन एंड ग्रीन विलेज पे हैं। तो इस बार लगता है कि जो हमारी मेजर जीपीडीपी बनेगी इस साल, वो ये 4 थीमों पे ही बननी है, बाकी पे थोड़ा कम है। तो उस पर, हाँ, तो ओपनिंग ऑफ पोर्टल का जो रिक्वायरमेंट मैं बता दे रहा हूँ कि इसके, ये जब तक ये 4 क्राइटेरिया नहीं होंगी और ये चारों क्राइटेरिया जब तक पोर्टल पे अपलोड नहीं होंगी, अपलोडिंग ऑल दीज विल ओनली ट्रिगर द ओपनिंग ऑफ द पोर्टल फॉर द पंचायत, है ना। पहला आपका है संकल्प लीजिए,
दूसरा है कि ओरिएंटेशन ऑफ स्टेट लेवल, डिस्ट्रिक्ट लेवल एंड ब्लॉक लेवल ऑफिशियल्स हो जाए, उसकी भी पोर्टल हमने बना रखी है, उसकी भी आप अपलोडिंग कर दें, सो दैट वी आर सेटिस्फाइड कि दैट पीपल हैव बीन एटलीस्ट डिस्कस्ड कि इस थीम पे जीपीडीपी ऐसे बननी है। तो दैट इज द थर्ड रिक्वायरमेंट। और चौथी रिक्वायरमेंट ये है कि हमारी जो कंसल्टेंट्स हैं और ऑफिसर्स हैं एनआईसी के, उनका हमने एक कैलेंडर बना रखा है, वो हर एक स्टेट जाएंगे और वहाँ पे उसको आपके अगेन एक बार फिर से आपके सारे स्टेट लेवल ऑफिसर्स, डिस्ट्रिक्ट लेवल ऑफिसर्स और ब्लॉक लेवल ऑफिसर्स के साथ 4-5 घंटे का वीसी पे इंटरेक्शन करेंगे और उनको फिर से बताएंगे कि ये प्रोसेस कैसी चलनी है। तो इसको प्लीज़ आप हाइपरलिंक कीजिए। तो ये हमने एक प्रोग्राम सारे स्टेट का बना दिया है और हमारे जो कंसल्टेंट्स हैं ऑलरेडी आपसे, आई थिंक दे आर इंगेजिंग विद द स्टेट्स। इफ द स्टेट्स नीड स्लाइट मॉडिफिकेशन ऑफ देयर डेट्स हियर एंड देयर, they can do it, but we will complete this whole process by end of December. So our 2-3 officers will go there in every state, discuss with them, ensure that the block level officials and district level officials, their all doubts are clarified, they have complete clarification on how this year GPDP will be prepared, है ना। फिर से वापस आइए। हाँ, तो नेक्स्ट इसमें एक चीज़ हमने किया है कि हर एक स्टेट के लिए हमने एक मेंटर की भी लिस्ट बना दी है, सो दैट आपकी एक एक डाउट जो है वो उनसे वो क्लियर करेंगे वो लोग, जैसे कि अवार्ड में था। सो वी आर फॉलोइंग द सेम थिंग एज अवार्ड, एवरीथिंग एवरी स्टेज। तो इसको क्लिक कीजिए। तो ये जो हमारी जो लिस्ट है वो आपकी है, यही अवार्ड वाली लिस्ट है जो कि आपकी सारी डाउट को क्लियर करेंगे, है ना। तो इसको चलिए, हाँ ठीक है, नेक्स्ट प्लीज वापस। हाँ, अच्छा इसमें एक चीज़ और है कि उसको अपलोड कीजिए। एक जो एक हम लोगों ने सैंपल जो बनाया हुआ है मास्टर जीपीडीपी। एक चीज़ हम लोग ये भी कर रहे हैं कि इस बार का जो जीपीडीपी वो थीमेटिक है। मान लीजिए कि चाइल्ड फ्रेंडली जीपीडीपी है, सो चाइल्ड फ्रेंडली जीपीडीपी में इन द मास्टर लिस्ट वी हैव जो ड्रॉप डाउन मेनू है। तो दिस ईयर जीपीडीपी वन मेजर चेंज इज ऑल्सो द जीपीडीपी इज कंप्लीट ड्रॉप डाउन मेनू। यू हैव नॉट टू राइट एनीथिंग, आपको कहीं कुछ लिखना ही नहीं है इस बार एक्सेप्ट राइटिंग एन अमाउंट कि उस एक्टिविटी पे आपकी कितनी खर्चे। अदरवाइज देयर इज नथिंग यू हैव टू राइट, एवरीथिंग इज ड्रॉप डाउन मेनू। तो जो हम लोगों ने एक मास्टर लिस्ट बना दी है एक्टिविटी की, सो चाइल्ड फ्रेंडली में सपोज देर आर 50 एक्टिविटीज एंड यू आर प्रिपेयरिंग जीपीडीपी फॉर द चाइल्ड फ्रेंडली। तो इस बार हम लोग एक चेक ये भी रख रहे हैं पोर्टल पे कि हम लोग तभी चाइल्ड फ्रेंडली जीपीडीपी मानेंगे जब कम से कम आप उस 50 में से 30-40 एक्टिविटी सिलेक्ट करेंगे, 25-30। ये नहीं होगा कि आपने 50 में 4 एक्टिविटी सिलेक्ट की और आपका चाइल्ड फ्रेंडली जीपीडीपी बन गया, वैसे नहीं हो पाएगा। बिकॉज आवर अल्टीमेट पर्पस गो फॉर सैचुरेशन इन एवरी थीम इन विद इन नेक्स्ट 3-4 ईयर्स, है ना। और दूसरा बात एक चीज़ और भी है, इसमें बहुत सारी एक्टिविटी वो मेंशन की गई हैं जो कि पंचायत इंप्लीमेंट नहीं कर रही है। दे आर बीइंग लाइक आंगनवाड़ी में काम हो रहा है, बच्चों को खाना खिलाया जा रहा है, स्कूल में मिड डे मील चल रहा है, दैट इज बीइंग इम्प्लीमेंटेड बाय स्कूल डिपार्टमेंट, एजुकेशन डिपार्टमेंट, health department, Anganwadi department. So you have to just select from drop down menu and ask from the concerned frontline worker how much budget is being spent. That's all. So this year GPDP is unlike last year where you are only preparing GPDP for finance commission. So that is not the case. Otherwise जो child friendly है उसमें finance commission का hardly 5% पैसा खर्च होता है, तो हम लोग कभी saturation कर ही नहीं पाएंगे। So this year GPDP में there will be at least 34% activities will be there which Panchayat is not implementing, which is being implemented by other department। तो उसकी भी लिस्टिंग तो वो केवल आपको मेंशन करना है, दैट यू हैव टू सिंपली मेंशन कि ये फीडिंग प्रोग्राम है, या आंगनवाड़ी का प्रोग्राम है, इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम है, ये न्यूट्रिशन प्रोग्राम है। जस्ट यू हैव टू मेंशन दैट, बट यू हैव टू डू इट बिकॉज आवर कंप्यूटर पोर्टल विल चेक इट। अगर आप नहीं करेंगे तो आपका जीपीडीपी फ्रीज नहीं होगा। सो वी हैव पुट ऑल द, है ना। तो इसके लिए ही हम लोग काफ़ी हैंड होल्डिंग सपोर्ट प्रोवाइड करेंगे। उसमें एक चीज़ हम लोग ये भी कर रहे हैं कि एक जो है पोर्टल में जिस सीक्वेंस में आपका ड्रॉप डाउन मेनू है, इन दैट वेरी सेम सीक्वेंस वी हैव प्रिपेयर्ड ए मास्टर ये जीपीडीपी टाइप का। जैसे अवार्ड में हम लोगों ने आपको हैंड होल्डिंग सपोर्ट दी थी, मास्टर बनाकर आप लोगों को दिया था पीडीएफ फाइल 50-60 पेज का, उसी तरह से इस बार भी हम लोग आपको हर एक थीम का एक मास्टर जीपीडीपी बनाकर देंगे, सो दैट यू आर क्लियर की करना क्या है, सो दैट द पंचायत आर नॉट वेरी मच ट्रबल्ड। सो आई थिंक प्रोवाइडिंग ऑल दिस सपोर्ट एंड गोइंग थ्रू इटरेटिव ओरिएंटेशंस, है ना। अगर उसमें आपका नवंबर, दिसंबर, जनवरी भी लगता है, यू प्लीज स्पेंड द टाइम
All those have to be uploaded on the portal. If the portal checks that all the requirements are met, then only the GPDP portal for that panchayat will open. And there are two, again, saving and freezing. जैसे अवार्ड में सेव करते थे, फ्री फ्रीज करते थे, तो पहले आप जीपीडीपी बनाएंगे, वो सेव होगा, विल सी दैट कि आपका क्राइटेरिया फुलफिल हो रहा है कि नहीं, 50% 60% एक्टिविटी सेलेक्ट किया है कि नहीं. उसके बाद से आप उसको ग्राम सभा में लेके जाइए. ग्राम सभा में जो और फर्दर जो अनुमोदन मिलता है, जो रिक्वायरमेंट मिलती है ग्राम सभा की, उसको थोड़ा माइनर चेंज कीजिए, देन रिवाइज इट एंड देन यू फ्रीज इट. So this is how this year GPDP will be worked out, and that's why this year we will take enough time on आपको जो हमारा जो ओरिएंटेशन के लिए एंड अंडरस्टैंडिंग के लिए. तो आई थिंक द एक्चुअल वर्क प्रिपेयरिंग जीपीडीपी विल स्टार्ट समथिंग बाय आफ्टर जनवरी 15 ओनली, बिकॉज 2-3 months विल गिव यू ओनली ऑन अंडरस्टैंडिंग एंड इटरेटिव. एंड एक चीज़ और मैं बता दूं कि हमारी जो टीम है कंसल्टेंट की, वो कंटिन्यूसली आपकी जीपीडी का कंकरेंट एवेल्युएशन करते रहेंगे और आपको फीडबैक देते रहेंगे. सो अभी कंकरेंट एवेल्युएशन कंटिन्यूस आपको देती जाएगी कि आपने अभी जो 50 जीपीडीपी अपलोड किए हैं, उसकी सिचुएशन ये है, इसको आप फर्दर इंप्रूव करें, है ना. तो देयर विल बी द सिस्टम ऑफ कंकरेंट एवेल्युएशन आल्सो रेगुलरली. आई थिंक दिस एक्चुअली आई वांटेड टू शेयर. एंड आपको अभी कंटिन्यूस हमारे जो लोग जाएंगे आपके स्टेट में, आपके साथ 4-5 घंटे इंटरेक्शन करेंगे, तो फर्दर क्लैरिटी आएगी. सो आई विल थिंक आई शुड स्टॉप यू. एंड अगेन मैं आप सब लोगों को बहुत कंग्रेचुलेट करूंगा कि आप लोगों के हेल्प से हमारा 90% अवार्ड फिलअप हो गया है. और जब आप लोगों ने 90% अवार्ड का फिलअप किया है, तो आई एम फुल्ली कन्विंस्ड एंड फुल्ली होपफुल कि हमारा जीपीडीपी इस बार भी थीमेटिक जो है वो 100% बनेगा. थैंक यू वेरी मच. And it was the presentation by Dr. Chandrasekhar Kumar, Additional Secretary, MOPR. And the topic we just listened about was the briefing on the next phase of the Panchayat Awards and the follow-up of revamped GPDP portal. So next, we are moving on to our panel discussion 4. So we would kindly request the dignitaries to please come onto the stage. Panel discussion number 4. The topic is Safety Net for Social, Economic and Environmental Protection through Panchayats. And this discussion is chaired by Dr. Sharmila Mary Joseph, Principal Secretary, Department of Local Self-Governments, Government of Kerala. We have in the panel the ministry, people, the NGOs, and the domain experts, along with the Grama Panchayat representatives. Requesting the panelists to kindly come onto the stage. We have Shri Robin George, Joint Director, Rural Development Department, Himachal Pradesh. Shri Ashirvadam, Sarpanch, Edida Gram Panchayats, Andhra Pradesh. Debabrata Supakar, Sarpanch, Rani Munda Gram Panchayat, Odisha. Shri Suresh Muttatil, President, Kadangalur Grama Panchayat, Kerala. Sukanta Sarkar, Pradhan. He is representing an NGO. Shri Mandar Vaidya, representing UNICEF. Nikhil Jose, State Management Officer, National Skill Development. And we have Shri S.M. Vijayanand, Ex-Secretary, Ministry of Panchayati Raj, Government of India. The panel discussion. May I please introduce the honorary dignitaries on the dais. Shri Robin George, Joint Director, Rural Development Department, Himachal Pradesh. Shri Asirvadam, Sarpanch, Edida Gram Panchayats, Andhra Pradesh. Shri Debabrata Supakar, Sarpanch, Rani Munda Gram Panchayat, Odisha.
Shri Suresh Muttatil, President, Kadungalur Gram Panchayat, Kerala. Shri Sukanta Sarkar Pradhan, Shri Mandar Vaidya, Shri Nikhil Jose, State Management Officer, National Skill Development. And we have Shri S.M. Vijayanand, Ex-Secretary, Ministry of Panchayati Raj, Government of India. On chair, we have Dr. Sharmila Mary Joseph, Principal Secretary, Department of Local Self-Governments, Governments of Kerala. Ma'am, please. Good morning, everyone, and welcome to the fourth panel discussion of this two-day program, the first panel discussion of the day. So in this panel discussion, the topic for the panel discussion is safety net for social, economic, and environmental protection through panchayats. So in this panel, we have representatives from the local bodies, from the local self-governments. We have an NGO representative. We have representative from UNICEF. We have representative from the ministry also. The panel, would be looking at how the local bodies, the panchayats, work out their programs with specific focus on social, economic, and environmental protection. So in yesterday's discussions, we tried to analyze the linkages between panchayat institutions, Panchayati Raj institutions, and SDGs in poverty alleviation and enhancing livelihood. So we found, or we discussed, that poverty is not just income poverty alone. Poverty has multiple dimensions. It is multidimensional and intergenerational. And unless and until we address the issues of malnutrition, ill health, low education, and of course environmental issues, unless these issues are all addressed, we would, the poor would end up being further poor. So our interventions, the interventions by local bodies, the interventions by governments, need to address all the different aspects, the social, economic, and environmental aspects, to ensure that there is a reduction in the level of poverty, and that we give a helping hand to those who are below the poverty line. We need a helping hand. We need to give them a helping hand to have provisions for earning a livelihood, and also getting good food, good education, good housing, and also to ensure that the area there where they live is, the environmental issues of the area where they live are also taken care of. So on the social side, in the social safety net side, we have, schemes like the NSAP, as well as other schemes where the vulnerable are given support by means of social assistance, where we give, funds under the social assistance programs, the old age pensions, the widow pensions, the disability pensions. So apart from the money given by Ministry of Rural Development, states top up, and in a state like Kerala, we go up to 1,600 rupees for beneficiaries under NSAP. But these, the benefits given under NSAP and the top-ups through the state social support programs, work out as gap-filling exercises. However, the extreme poor, the bedridden, the abandoned, they need further support from government. So that is what, Secretary RD in his speech yesterday mentioned, how, every destitute household needs support from the local bodies, need support from government. And that is what, we in Kerala are also doing. We identified the extreme poor families through a massive exercise last year. Details we discussed yesterday. So, this exercise, say we have identified around 64,006 families who are extremely poor, and the panchayats and the Kudumbasri are working out micro plans to support each of these families, each of these
households identified as destitute households. And we also have worked out, schemes like Vadil Padi Sevanam, where services are provided to the destitute at their households. घर के पास, household के पास a service देने के लिए through volunteers हमने identified किया है जो इनके houses जाके benefits देने के लिए वो old people को, bedridden people को, destitutes को benefits अपने घर पे देने के लिए एक program वादिल पड़ी सेवनम services at the household हमने डिसाइन किया है. हमारा पंचायत थ्रू हम वो implement करते हैं. When we look at economic support, we have livelihood support programs like the programs under NRLM, the various livelihood support programs of the state governments through Kudumbasri and similar programs. We have the wage employment program under MNREGS, where wages are provided for employment, for work done by the workers for at least 100 days in a year. So this is a demand-driven project, and states, provide more support to for wage employment, for employment generation activity through their own schemes. So we have for the extremely vulnerable people, the Tribal Plus scheme, where the ST department through another 100 days of employment is provided to tribal families who are demanding employment. So ST families को MNREGS और Tribal Plus मिल करके जोड़ करके 200 labor days एक साल में हम देते हैं. So similar programs दूसरी states में भी है, अगले राज्यों में भी similar convergence programs for employment generation है. Environment protection, yes, that also is covered in today's discussion. So we would be looking at how local bodies have a role in environment protection. So in respect of our state, the local bodies are in the exercise of preparing, risk-informed master plans. So we had 2 urban local bodies, Manandwadi and Chegannur, which prepared risk-informed master plan. And Panchayats and municipalities along the Pamba River Basin are preparing their master plans with the support of the State Disaster Management Department also. So a GIS से 29 layers हमने map किया है through Disaster Management Department, which is specific to local body jurisdiction. A local body के geographical jurisdiction के limit करके वो plans तैयार है. और वो local body के planning के लिए अपने area के environment protection के लिए वो plan करने के लिए a maps, it becomes useful for the individual local bodies. So these are some of the initial thoughts that I had that I thought I would share with the audience. So now we will go on to the video presentations. So we have a video film on National Social Assistance Program first, and then we take the 4 videos of Rural Development Department of Himachal Pradesh, then from Edida Grama Panchayat of Andhra Pradesh, Rani Munda Grama Panchayat of Odisha, and Kadungalur Grama Panchayat of Kerala. So we have the first 4 videos now. India, a nation that has consistently improved its ranking among the largest economies of the world. Our country has grown strong on its own terms, efficiently overcoming all hurdles. Nonetheless, this momentum will sustain only when every Indian citizen gets included in this journey of growth. No one should be left behind. It is also true that a large number of people in India still languish below the poverty line. To counter life's myriad challenges with confidence, they need a shield of security. This express needs gets fulfilled by the National Social Assistance Program. Under the aegis of the Ministry of Rural Development, the National Social Assistance Program provides a number of pension schemes for citizens living below the poverty line. National Old Age Pension Scheme for senior citizens over 60 years of age, National Disability Pension Scheme for persons with disability,
They should be over 18 years of age and with over 80% disability. National Widow Pension Scheme for widows over 40 years old. National Family Benefit Scheme for families where the only earning member of the family dies. Age of the deceased should be between 18 to 59 years. The family gets a grant of 20,000 rupees. The direct benefit transfer or the system of pension getting credited directly into bank accounts through door-to-door visits, data was collected, scrutinized and updated. This database included people who are getting pension benefits and also those who were eligible but not getting their due entitlement. All accumulated data were fed into computers. All further steps were managed through the use of a streamlined portal. पेंशनर्स के बैंक अकाउंट्स और आधार हम अपने डिजिटाइजेशन में इंक्लूड करते हैं और आधार चूँकि आधार डेटाबेस के साथ हमारा सिस्टम जुड़ा हुआ है, ऑन फ्लाई आधार नंबर और उसका नेम एज पर आधार अगर हम डालें तो इमीडिएटली हमें ये पता चल जाता है कि ये आधार सही है या नहीं है और इमीडिएटली हम ये भी तुरंत पता कर लेते हैं कि ये आधार बैंक से लिंक है या नहीं है. Apart from pension schemes, a crucial aspect of the National Social Assistance Program is convergence with the welfare programs of the Ministry of Rural Development meant for the impoverished rural population. For instance, at Mahatma Gandhi Narega sites, elders and persons with disability are employed to provide drinking water and to look after children of working mothers. It is ensured that they get the same wages as all other workers. Deen Dayal Upadhyay Gramin Kaushalya Yojana ensures 3% of seats for training are earmarked for persons with disability. This is to make them skilled and self-reliant. The Pradhan Mantri Awas Yojana has the provision to ensure 3% beneficiaries are differently abled. Under the National Rural Livelihood Mission or NRLM, there is a provision of setting up self-help groups for the elders. Women and men who are over 55 years of age can be members of these groups. The National Social Assistance Program provides pension to 3 crore 9 lakh beneficiaries every month. Efforts are on to take these benefits to everyone who need this support. The nation is concerned about its elder and its marginalized people caught in the crossfire of circumstances. The country will support them, provide them with opportunities to live a self-reliant and dignified life. That's the mandate of the National Social Assistance Program. This was a video film on National Social Assistance Program by Ministry of Rural Development. Now we have a video film on social protection of marginalized communities for inclusive development, and this presentation is from Himachal Pradesh. मैं हिमाचल हूं। मेरा दिल इसकी हरी भरी घाटियों में बसे गांवों में धड़कता है। मेरी शांत और मनमोहक वादियों में बसा जनजीवन ही मेरी शान है। इनकी बदौलत ही तो हिमाचल को देश के अग्रणी प्रदेश की पहचान मिली है। हिमाचल की ऐसी पहचान बनाने का श्रेय राज्य की उन ग्राम पंचायतों को जाता है जिन्होंने मेरे गांवों को न सिर्फ गरीबी मुक्त बनाया बल्कि सतत रोजगार के अवसर मुहैया करवाकर सामाजिक सुरक्षा भी सुनिश्चित की। इसकी जीती जागती मिसाल है हिमाचल प्रदेश के मंडी जिले के सिराज ब्लॉक की बहली धार ग्राम पंचायत, जहां मनरेगा और महिलाओं के स्वयं सहायता समूह ने सरकारी योजनाओं का इतनी सूझबूझ से फायदा उठाया है कि देखते ही देखते पूरे गांव का कायाकल्प हो गया। बहली धार ग्राम पंचायत की जनसंख्या करीब 1057 है, जिनमें 524 पुरुष और 533 महिलाएं हैं। यहाँ पर 14 सहायता समूह हैं और पंचायत में मनरेगा के तहत 458 जॉब कार्ड बनाए गए हैं। अगर मनरेगा के तहत विकास कार्य की बात करें
तो करीब 5,89,600 रुपए की धनराशि यहां खर्च की गई है, जिसकी मदद से यहां सड़क निर्माण कर गांवों को सड़कों से जोड़ा गया। इससे स्थानीय लोगों को अपना उत्पाद मंडी पहुंचाने में आसानी हुई और रोजगार के नए अवसर खुले। बहली धार ग्राम पंचायत की महिलाएं अब अपने स्वयं सहायता समूह के जरिए गांव का हर एक काम मिलजुल कर और खुद करती हैं। फिर चाहे बात खेती बाड़ी की नई और उन्नत तकनीकों के इस्तेमाल की हो या पैदावार को बाजार में भेजकर उम्दा दाम हासिल करने की हो या फिर कृषि उपकरणों की खरीदारी के लिए फाइनेंस करवाने का काम हो। जो हमारी महिला मंडल की जो लेडीज इस स्वयं सहायता समूह में जुड़ी हैं, जिसे हमारे को बहुत अच्छा बेनिफिट मिल रहा है, जिसमें हम अच्छे अच्छे प्रोडक्ट बनाते हैं, जैसे पुले और जुराबें और सिड्डू कचौरी वगैरह जो बनाते हैं, और जिससे हमारी इनकम अच्छी चलती है। और मुख्यमंत्री के तहत हमारे को हर समूह की महिलाओं को 25-25 हज़ार भी मिल चुके हैं। बहली धार गांव में अनेक विकास योजनाओं के क्रियान्वयन में मनरेगा ने भी शानदार भूमिका निभाई है, क्योंकि इससे ही हर एक ग्रामीण को रोजगार सुनिश्चित हुआ। हिमाचल में साल 2021-22 में मनरेगा के तहत केंद्र ने 882 करोड़ रुपए और राज्य सरकार ने 130 करोड़ रुपए से ज्यादा खर्च किए। ऐसी कोशिशों से बहली धार के निवासियों की आमदनी बढ़ी और अब तरक्की का असर गांव में साफ दिखाई देता है। हिमाचल प्रदेश की 3,615 ग्राम पंचायतों में अब 41,300 से ज्यादा स्वयं सहायता समूह यानी सेल्फ हेल्प ग्रुप सक्रिय हैं। इसके 3.5 लाख से ज्यादा सदस्यों में सिर्फ 1,700 पुरुष और बाकी सभी महिलाएं हैं। हिमाचल के पंचायती राज विभाग ने हर एक ग्राम पंचायत में कमजोर वर्ग की पहचान करके उनकी जरूरतों के हिसाब से योजनाओं का ऐसा सफल क्रियान्वयन किया, जिससे कोई भी वर्ग फिर से गरीबी के दलदल में वापस नहीं जा सके। यही वजह है कि अब हिमाचल के गांव में सभी के लिए आजीविका, विकास और खुशहाली है। इकट्ठा होकर के सभी महिलाएं आई और फिर उन्होंने वो सारी योजना पे उन्होंने अपना कारोबार उससे चलाना सीखा। फिर दूर दूर से औरतें आई, फिर इनका ग्रुप बना, ग्रुप के माध्यम से इन्होंने बहुत सारे प्रोजेक्ट चलाए और इसमें बहुत सारी औरतों को रोजगार मिला। Next, we have a video presentation from Andhra Pradesh. And the topic is MGNREGA. The green villages of Andhra Pradesh are a testament to the aspirations of the Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Scheme and are also providing sustained livelihood to the poor. MG Naregas is being implemented extensively through a tree plantation program covering 33% of the geographical area of the state under the initiative Jagananna Pachatoranam with a view to improve greenery in the state. During the years 2021 and 21-22, 122.85 lakh saplings were planted in Avenue Plantation, covering an area of 30,714 kilometers. With this momentum, hopes arise especially amongst the SC/ST BCs, small and marginal farmers in the villages. Farmers owing less than 5 acres of fallow land are provided assistance to attain productive assets and a sustainable source of income. Saplings desired by the beneficiaries are provided at free of cost. In the last 2 years, 75,373 farmers have planted 44,531 hectares of orchids under flute plantation. 14 varieties of fruits like mango, jamun, coconut, sweet orange are cultivated, while adding dragon fruit since this year. Maintenance is also taken care of. Up to 100% days per year towards watch and ward of the crop, up to 3 years to sustain the farmer till the fruits set and income is generated. Adequate job work is provided to the locals by making full use of the vacant lands on the premises of government institutions such as schools and hospitals. 1.2 lakh saplings have been planted in 1,272 school premises. Under block plantation, planting of coconut and almond trees in vacant government lands, burial grounds, railway station approach roads, and on riverbanks in the villages is done.
38,000 saplings in 98 places are planted so far. Since the year 2021, nearly 9.3 lakh plants were planted, providing 4,905 works. Sowing and planting program was carried out on about 90 hectares on 97 hillocks to improve afforestation on barren hillocks. As part of floriculture, 694 farmers are planting flower fields on 332 acres. 101 village parks have been developed by planting 20,000 plants. Under bund plantation, planting of trees such as teak, neem has started. Thus, MG Naregas is paving way for an improved standard of living amongst the farmers of AP while transforming it into a green AP. That was a presentation from Andhra Pradesh. Now we have a video presentation from Rani Munda Gram Panchayat, Odisha, and the topic is about employment and economic projection through MG Nrega. ओडिशा के नुआपड़ा जिले के सिनापल्ली ब्लॉक की रानी मुंडा पंचायत 8-10 साल पहले यहाँ रोजगार का कोई खास साधन नहीं था। काम न मिलने पर लोग रोजी रोटी कमाने के लिए दूसरे राज्यों में चले जाते थे। उन्हीं लोगों के साथ कुछ पैसे कमाने के इरादे से अपना गांव छोड़ा था भक्तो तांडी ने। दिन बीतते गए, समय भी बदलता गया। कोविड-19 के आतंक और तालाबंदी ने उसे अपने गांव वापस आने के लिए मजबूर कर दिया। अपनी आजीविका खोने के बाद रोजी रोटी की तलाश कर रहे भक्तों के लिए संजीवनी बनकर आई नरेगा। पंचायत में आवेदन करने पर उसे नरेगा जॉब कार्ड मिला। राजमिस्त्री काम के प्रशिक्षण के साथ उसे काम भी मिला। बस अब यह राजमिस्त्री काम ने ही उसे आत्मनिर्भर बना दिया है। सिर्फ भक्त ही क्यों, उसके जैसे लगभग 67 परिवार के कमाऊ बेटों को अब कमाई के लिए राज्य के बाहर जाने की जरूरत नहीं पड़ती है। गोटे बिजु पक्का घर भी मिलता सर, से बिजु पक्का घर के मोर भल किना कला पर लोक माने मोर काम के प्रशंसा कले। अब से काम करबा जरिया रे मुई लोक मानकर पाखे टिके विभिन्न प्रकार काम पाइली। भक्त की तरह 35 जॉब कार्ड धारकों को रिंग वेल और इरिगेशन वेल उपलब्ध कराए गए हैं, जिससे उनके परिवारों को आजीविका का एक दीर्घसूत्री स्रोत मिल गया है। 67 लाभार्थियों को जमीन की मरम्मत के लिए 30,000 रुपये दिए गए हैं। 5% मॉडल टैंक को भी यहाँ प्राथमिकता दी गई होने के कारण जमीन की नमी बरकरार रहती है और किसान फसल के नुकसान से बच पा रहे हैं। 12 लाभार्थियों को मल्टीपर्पज फार्म पॉन्ड दिए गए हैं। तालाब में पानी रहने के कारण मछली पालन के साथ साथ धान की खेती भी हो पा रही है। पिछले 3 सालों में 27 लाभार्थियों को काव शेड दिए गए हैं, जिसके फलस्वरूप वे गाय पालकर दूध और घी बेचकर लाभान्वित हो रहे हैं। इस पंचायत में कन्वर्जेंस पर सबसे ज्यादा जोर दिया गया है। 30 लाख रुपयों के खर्च से बनाया गया है गांव का हाट। एक अच्छे वातावरण में आसपास के 500 किसानों की खुशियों का ठिकाना नहीं है। ग्राउंड वाटर रिचार्ज के लिए पेवर ब्लॉक किया गया है। यहाँ गांव के लोगों को भी मिल रही है शहरों वाली सुविधाएं। नरेगा वित्त आयोग के अनुदान और पश्चिम ओडिशा विकास परिषद निधि के विनियोग से गांव में बनाया गया है एक पार्क, जहां बच्चों से लेकर बड़ों के लिए आनंद प्राप्ति की सभी सुविधाएं मौजूद हैं। आगो गाँव नहीं थी सर, एबे आमर पार गोटे हला छुआ मने आसी कर खेलु छन, आमर फुन सुविधा ही गला। एसएचजी महिलाओं के लिए महात्मा गांधी नरेगा के साथ साथ महिला तथा बाल विकास विभाग के समन्वय से बना है मिशन शक्ति भवन। सरकार को एमजीएनआरजे तथा आउ अन्य योजना जो आसिला सही योजना बल मु ए अंचल रे मोर समस्त कर्मचारी मान को लेकर जनसाधारण को साहाय्य सहयोग क्रमे हमें अनेक प्रकार काम जोगैछु। नरेगा में काम करने के लिए लोगों को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से राज्य सरकार 104 रुपये अधिक मजदूरी दे रही है। इस पंचायत में लाभार्थियों को साल भर में 300 दिन का काम उपलब्ध कराने पर जोर दिया जा रहा है। सरपंच,
वार्ड मेंबर, चुने गए जनप्रतिनिधि और लोगों के सहयोग से ऐसे कई कदम उठाते हुए बंधुआ मजदूरी से ग्रस्त सीनापली ब्लॉक की रानी मुंडा ग्राम पंचायत में नरेगा योजना के सफल कार्यान्वयन से रानी मुंडा अब एक गरीबी मुक्त ग्राम पंचायत बनने की दिशा में कुछ माइल आगे निकल चुका है। That was a presentation from Odisha. And now we have a video film on disaster management, which is presented by the Kadangallur Gram Panchayat of Kerala. The Disaster Management Plan is an action plan formulated under the leadership of the Rebuild Kerala program and KILA. Kadangallur Grama Panchayat is one of the panchayats which has completed the DM plan by ensuring people's participation. Around 47,000 people living in the panchayat mainly depend on the industrial sector for their livelihood. Recent floods in Kerala severely affected the panchayat. 85% of the places were drowned in the flood. Panchayat has conducted several innovative programs as part of the preparation of the DM plan. Panchayat conducted exhibitions along with the developmental seminar to portray the process and DM plan preparation to the public. Special Grama Sabhas were conducted effectively in 21 wards of the Panchayat and conducted focus group discussions. Panchayat did an extensive level of data collection by ensuring the participation of all sectors of the people in the locality. Panchayat has conducted training for 1,800 volunteers at the ward level emergency response team. Through this disaster management plan, Kadangallur Grama Panchayat is well equipped. Requesting Sharmila ma'am. Yeah, so we saw one presentation from the Ministry of Rural Development regarding the NSAP scheme, and there were four presentations from 4 panchayats. So the MORD presentation was giving a brief overview of the pension schemes under the broad umbrella of the National Social Assistance Program. Now, Himachal Pradesh से वो जॉइंट डायरेक्टर रूरल डेवलपमेंट अपने डिस्ट्रिक्ट में अपने पंचायत में बहालीदार पंचायत के MNREGA के इम्प्लीमेंटेशन के बारे में था वो प्रेजेंटेशन. सो आपसे एक सवाल है, कैसे आप एम्प्लॉयमेंट जनरेशन MNREGA थ्रू देने के बाद वो प्रोडक्ट्स को या वो ग्रुप्स को कैसे मार्केट लिंकेज कैसे अरेंज करते हैं, और अदर स्कीम्स से स्टेट गवर्नमेंट और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के दूसरे स्कीम्स से लिंकेजेस कैसे बनाते हैं, और बैंक लोन्स वगैरह वो अरेंज करने के लिए क्या क्या फैसिलिटेशन अपने डिपार्टमेंट से दे रहे हैं. इन हिमाचल हम लोग ऐसा कर रहे हैं कि हिमाचल में जो कि MG नरेगा है एज सच, वैसे उसमें जो पार्टिसिपेशन ऑफ वुमेन फोक है वो इट इज़ मोर देन 61%, 62%. तो इनवेरिएबली जितनी महिलाएं मनरेगा के अंतर्गत कार्य करती हैं, दे हैपन टू बी द मेंबर्स ऑफ SHGs. तो वो जो कन्वर्जेंस है एट द लेवल ऑफ मतलब पंचायत की जो मनरेगा और SHG मूवमेंट के अंदर होना चाहिए, वो ऑटोमेटिकली हो जाता है. 1
सेकेंडली गवर्नमेंट की जो स्कीम्स हैं, लाइक हम लोगों ने एक स्कीम स्टार्ट की है, महिला मंडल महिला मुख्यमंत्री महिला सशक्तिकरण योजना, एंड द अदर वन इज़ मुख्यमंत्री एक बीघा योजना। ये सारी जो स्कीमें हैं वो एसएचजी मेंबर्स को टारगेट करती हैं। मुख्यमंत्री एक बीघा योजना में अप टू 1 लाख रुपीज़ की नर्सरी ओब्लिक किचन गार्डन लेडीज़ अपने जो एसएचजी के मेंबर्स हैं वो अपने यहाँ पे इस्टेब्लिश कर सकती हैं। इस तरीके से जो बाकी जो आपका मुख्यमंत्री महिला सशक्तिकरण योजना है उसमें गवर्नमेंट स्पेशल जितने क्या कहते हैं जो एसएचजीज के मेंबर्स हैं उनको प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, प्रधानमंत्री सुरक्षा योजना, बीमा सुरक्षा योजना, उसमें उसका बीमा उसके जो बीमा की राशि है वो देती है। अपार्ट फ्रॉम दिस हम लोग इसमें एक दूसरी स्कीम है मुख्यमंत्री ग्राम कौशल योजना। अगेन जो क्या बोलते हैं जो महिलाएं हमारी मनरेगा के अंतर्गत कार्य कर रही हैं वही महिलाएं जब एसएचजी की मेंबर्स हैं उनको अगर वो ऐसे क्या बोलते मनरेगा के अलावा कोई स्किल डेवलपमेंट के ऊपर कार्य करना चाहती हैं, जैसे कि जो हमारे रूरल आर्टिजन्स हैं, जो हमारी ओरिजिनल जो पुरानी जो ट्रेडिशंस चल रहे हैं, ट्रेडिशनल आर्ट है, उसको भी उसकी की ट्रेनिंग देने के लिए, उसको प्रोत्साहन देने के लिए, अपार्ट फ्रॉम दैट क्या कहते हैं लोगों को की इनकम को एक प्रकार से मतलब टू गिव इम्पिटस टू देयर इनकम, तो वो उसके लिए हम लोगों ने ट्रेनिंग की प्रोविज़न किया है। विलेज लेवल पे ट्रेनर्स हमने सेलेक्ट किए हैं जो कि पुराने आर्ट को लेते हैं, उसके बाद वो आर्ट को मतलब क्या दे ट्रेन दोज लेडीज़ एंड द अदर पीपल जो आगे जाके इस चीज़ को मतलब आगे हमारे नॉट ओनली वी आर एबल टू मतलब गिव इम्पेटस टू आवर ट्रेडिशनल आर्ट, बट इवन इनकम की जो विलेज लेवल पे इनकम है उसको वी आर एबल टू इंक्रीज। अपार्ट फ्रॉम दैट लाइक हमारे पास एक चीज़ और है कि कन्वर्जेंस मतलब कन्वर्जेंस अंडर मनरेगा इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, क्योंकि मनरेगा पर से काम नहीं कर रहा, उसको हम लोग वी आर कन्वर्जिंग इट विद प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना and also with the other schemes of the other departments. So that helps us to ensure that the overall income of a family increases. And for the other part, ma'am, which you had asked कि जिसमें हम लोगों को मार्केटिंग में हाउ वी आर हेल्पिंग देम, मार्केटिंग में भी हेल्प करने के लिए क्या बोलते हैं हम लोगों ने अभी इनिशियल स्टेजेस पे हम भी ब्रांड डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं। वी आर वर्किंग ऑन दैट, लाइक इन फ्यू डिस्ट्रिक्ट्स ब्रांड्स हैव बीन डेवलप्ड। बाकी हमारी एक क्या बोलते हैं स्टेट लेवल पे भी ब्रांड डेवलप की गई है, उसको भी हम क्या बोलते कर रहे हैं। एंड देन वी आर मतलब वी हैव आल्सो टेकन अप मेजर्स कि जो हमारी अमेज़ॉन या फ्लिपकार्ट है उनके साथ सर्टन जो हमारी जो ट्रेडिशनल वो हम चीज़ें बना रहे हैं उनको हम उसके साथ सेल आउट करने की मतलब वी आर वर्किंग ऑन दैट। Okay, that's very good. And you have it's a small the example of Bahali there, it's a small panchayat with 1057 population only, so you know the panchayat would actually be able to take care of the actual the people who जिसको सपोर्ट ज़्यादा चाहिए, ज़रूर मिलना चाहिए, उनके सारे वो देखने के लिए पंचायत को भी मुलाकात है। तो थैंक यू वेरी मच मिस्टर रॉबिन जॉर्ज। अभी रानी मुंडा पंचायत के सरपंच श्री देवव्रता सुपाकर उड़ीसा से है, तो उनके डिस्ट्रिक्ट में भी उनके पंचायत में भी वो NREGS से कैसे अपने पंचायत का थोड़ा इकोनॉमिक अपलिफ्टमेंट कैसा हुआ, ओवरऑल इम्पैक्ट कैसा है, सो सबको एम्प्लॉयमेंट है। आपने बताया कि 300 डेज़ के लिए 300 दिन के लिए हम आपके पंचायत से MNREGS थ्रू जॉब दे रहे हैं, तो अधिक वेजेस भी दे रहे हैं, तो इसके इम्पैक्ट से क्या आपके पंचायत में सभी बच्चे लोग स्कूल जाते हैं, स्कूल ड्रॉप आउट का रेट कम हुआ क्या, और ये जनरल हेल्थ एंड न्यूट्रिशन आपके पंचायत में वो महिलाओं का किशोरी गर्ल्स का एडोलेसेंट गर्ल्स का वो जनरल हेल्थ का
इम्प्रूवमेंट कैसा है, उसके बारे में आप थोड़ा बता सकते हैं? मेरा ग्राम पंचायत रानी मुंडा 10 साल पहले एक अनुन्नत ग्राम पंचायत के रूप में जाना जाता था। वहाँ मेरा ग्राम पंचायत में कम से कम 80% परिवार दरिद्र की सीमा रेखा तले नीचे गरीब परिवार रहते थे, जो कि सितंबर अक्टूबर को पूरे गांव का 80% परिवार आउट ऑफ स्टेट लेबर काम करने के लिए जाते थे। और जब वो लौटे थे मैडम, कुछ परिवार की कुछ लोग मर जाते थे दुर्घटना में, रोग में, बाहर से, कुछ गायब हो जाते थे। तो जो परिवार गायब हो जाते थे, कुछ मर जाते थे, वो परिवार का संपूर्ण दायित्व एज ए सरपंच मुझे निभाना पड़ता था। ये बड़े दुखद घटना है। इसी के लिए, ये समस्या को समाधान करने के लिए, हमारा ग्राम पंचायत के प्रत्येक परिवार का इकोनॉमिकल कंडीशन को ठीक करने के लिए, और बाहर जैसे नहीं जाएंगे, इसीलिए हम हमारे वार्ड मेंबर, हमारा लोग की समर्थन से ग्राम सभा करवाए। ग्राम सभा में जो जो बाहर जाते थे उनको हम बुलाए और एक एक करके उनका समस्या समाधान किया। प्रथम 60 से 70 परिवार को हम डॉगवेल दिए, सेच कूप। डॉगवेल से 1,60,000 नरेगा का माध्यम से हम दिए। तो डॉगवेल किए तो डॉगवेल से एक परमानेंट एसेट्स क्रिएट हुआ और वहाँ पानी को यूज करके ग्रीन वेजिटेबल को करके उनका जीवन निर्वाह किए। तो और कुछ आदमी जो चाहे उनको हम वाटर सेट प्रकल्प के जरिए से मुफ्त में दुधियाल गाय काऊ दे और उनको रक्षणाबेक्षण करने के लिए नरेगा से 1,30,000 एस्टिमेट का काऊ सेट दे। तो काऊ वो पालन करके वो उनका जीविका, उनका इकोनॉमिकल कंडीशन सुदृढ़ हुआ, एसेट्स क्रिएट हुआ। हमारा अंचल का जमी, हमारा मरुड़ी प्रपीड़ित अंचल है, तो हमारा जमी को नमी रखने के लिए हम किसानों को टीसीबी 5% मॉडल, वो जो एनआरईजे का स्कीम है, उनको उपलब्ध किया। और जो जमीन में धान चाष करते हैं उनको हम जमीन मरामती, जो आदिवासी लोग हैं जंगल जमी का पट्टा पाए हैं, उनको हम 50,000 का एस्टिमेट में जमी मरामती दिया। वो जमी मरामती करके हुड़ा में वो डाल जातीय फसल उगाए और जमीन में धान कमाए, उनका भी इकोनॉमिकल कंडीशन ठीक हुआ। वो जो शस्य उत्पादन किए उसके लिए मार्केट वैल्यू, मार्केट का फैसिलिटी नहीं था हमारे पास। तो हम नरेगा की और कन्वर्जेंस सीएफसी 15 सीएफसी की एक भव्य मार्केट निर्माण किया ग्राम पंचायत के सामने, जो कि जो डॉगवेल, जो काउसेट के दूध और घी उत्पादन किए, जो जमीन में धान उत्पादन किए, जो जो भी कच्चा माल हुआ वो मार्केट के आके वो लाभान्वित हुए। थर्ड हुआ जिसका जमीन नहीं है, जिसका कोई भी साधन नहीं है, ऐसे गरीब आदमी को हम अंत्योदय अन्न योजना में 35 केजी चावल एक परिवार को 1 रुपया के जरिए से उनको दिए। तो मास में 35 केजी चावल पाया। फिर हम जब भी चाहे हमारा पंचायत में हम घोषणा कर दिया, जो भी आएगा हम MGNREGA में उनको काम देंगे और काम पाए। ये हुआ। फिर हम SHG ग्रुप को लाभान्वित करने के लिए एक मिशन शक्ति का गृह निर्माण किया, जो कि NREGA एंड चाइल्ड एंड वुमेन डेवलपमेंट स्कीम को मिला के कन्वर्जेंस करके एक मिशन शक्ति किया। वहाँ एक दुकान बनवाया जहाँ SHG की महिलाओं ने अपने सामान लाके वहाँ बिक के वो लाभान्वित हुए। हमारा पंचायत में 4-5 टैंक है, उसमें मछली चाष करने के लिए SHG ग्रुप को हम 3 वर्षीय लॉन्ग टर्म नीलामी दिया, जो वहाँ से माछ चाष किए और लाभान्वित हुए। ऐसे हमारे प्रत्येक काम हम ग्राम पंचायत के लोग जैसे बाहर नहीं जाएंगे, इकोनॉमिकल कंडीशन ठीक रहेगा, इसीलिए हम कोशिश किए। और हमारा आज
मैं गारंटी के साथ कहूँगा, मेरे ग्राम पंचायत के प्रत्येक परिवार के पास आज चावल है खाने के लिए, और प्रत्येक परिवार के अकाउंट में कम से कम 15-20 हजार का रुपया जमा हुआ है। और आज मैं दावा के साथ कहूँगा कि मेरा ग्राम पंचायत में गरीबी नहीं है, संपूर्ण भावे पॉवर्टी फ्री विलेज है। और इसीलिए इसी की फलस्वरूप मैं तो पहले 4 बार निर्वाचित ग्राम पंचायत में निर्वाचित हुआ था। इसी के फलस्वरूप मेरे पीपुल ऑफ माय विलेज, माय जीपी, दे वेरी कोऑपरेट टू मी, एंड नाउ इस इलेक्शन में मुझे अनकंटेस्ट सरपंच के रूप में निर्वाचित किया। यह मेरा संपूर्ण सक्सेस स्टोरी है। मैं सक्सेस होके ही यहाँ आपके पास आया हूँ। फिर मेरे ग्राम पंचायत के लोग मुझे निवेदन किया, तो हम शहर में पार्क देखते हैं, हमको पार्क चाहिए, तो हम एक भव्य पार्क निर्माण किया हमारे ग्राम पंचायत के सामने, जहाँ बच्चों लोग खेलते हैं और जो जवान लोग हैं जो जिम के लिए स्पोर्ट्स का टोटल आर्टिकल हम रखे हैं। ऐसे हमारा ग्राम पंचायत का जैसे कोई भी काम, हम जो भी एनआरईजे और प्रत्येक प्रोजेक्ट को लेके काम करते हैं, सब जैसे एसेट्स होगा वो एसेट्स के होके वो जैसे प्रत्येक दिन के लिए, प्रत्येक समय के लिए वो एसेट से पैसा पाएं और निजर अपना जीवन निर्वाह करें, ऐसे हम प्रोजेक्ट करते हैं। और आज ये हमको सफल रूपायन होने का संभावना क्रिएट किया। ये वेरी गुड, बहुत अच्छा है। और that is the spirit, MNREGS and convergence with other schemes, how that has shown a definite impact in the in his panchayat area. बहुत धन्यवाद। और एक बात है, और अभी हाँ मैडम, 3 और प्रेजेंटेशन से 2 प्रेसिडेंट्स को भी बताना है। So अभी from Andhra Pradesh we have the president from Edida Grama Panchayat, Sri Asirvadam. तो उनके पंचायत में भी the presentation showed how how MNREGS has given a boost to horticulture, floriculture, plantations of planting various trees along the roads, in the school buildings. So is your panchayat a coastal village? And with the plantations that you have done under MNREGS, वो coastal erosion का कम हुआ है क्या? और you have given a specific focus on horticulture and floriculture. So are your products, are the SDGs or the panchayat able to send its products, the flowers, cut flowers, etc. outside the state or outside the country? ऐसा export के लिए कुछ linkages या facilitation देने का plan है या already हो चुका है? Good morning, Dr. Sarbila Mary Joseph Madam Garu. Garu is the Andhra Pradesh people's of respectable name of Garu. Respected panel members and all delegates who attending here, Andariki Namaskaram. Myself, I am Buriga Asirvadam. I am the Sarpanch of Edida village, Dr. B.R. Ambedkar, Konaseema district of Andhra Pradesh. It is a pleasure to me, as well as great opportunity for me being a part of this national level conference at Kochi about SDGs. Theme 1, Poverty Free Enhanced Livelihood Panchayat. Our state government, under the able leadership of our Honorable Chief Minister, Sri Y.S. Jagan Mohan Reddy Garu, is highly dedicated in implementation of welfare programs under a flagship name Navaratnalu. With the help of innovative institutions, Grama Sachivalayam system and voluntary system for achieving sustainable development goals set up by the United Nations. Through the Sachivalayam and voluntary system, government schemes are
directly reached to the doorstep of the beneficiaries. I being the Sarpanch of Grama President, very proud to be part of this NYT system. As a Sarpanch, I am taking step for the effective implementation of Narega with an aim to provide employment to the unskilled workers to avoid migrations and also marginalizing the poverty in my Grama Panchayati. So, what about the linkages that you are providing for the In our MNREGs? In our my Panchayat, 80% mandates generate to 1,274 wages seekers, covering about 1,000 families. Okay. We are undertaking the work like digital canals, strengthening of bunds, laying earthen roads. For this work can amount 63.74 lakhs rupees were directly deposited into the account of wages seekers through DBT. Okay. As a Sarpanch, I want to provide 100% employment to my Panchayat for eradication of poverty. Further, I make a coverage platform between Gram Sachivalayam and Narega, so that we issued job cards in 24 hours timeline. Job cards timeline by our Gram Sachivalayam digital assistants, and we monitoring work with a team of Panchayat secretary, engineering assistant and voluntary system. With this invitation, we claim the Narega is playing a commendable role in reduction of poverty in our village. Okay, very good. We are working as per the guidelines set by the state for achieving the sustainable development goals in Grama Panchayat with a noble initiation to make my Panchayat as a poverty-free, enhanced livelihood Panchayat through localization of SDGs. Okay, thank you very much. So I will, because we are running short of time, I will request the next Panchayat President, Kadangallur Panchayat President from Kerala, Sri Suresh Muttathil. So in his presentation, he was showing the presentation from the Panchayat showed how disaster management plans were prepared by the Panchayat with the active participation of Madam, recently my honorable ministries Sachivalayam, Panchayatis and divided Sachivalayas. Okay. Gram Sachivalayam is a new system of dedication. Okay, very good. So In my okay. So abhi my decentralization of Panchayati system. In my Chief Minister of Y. Jagan Mohan Reddy. Okay, very good. बहुत congratulations. So अभी हमारे पंचायत president Sri Suresh Muttathil है. So they have prepared, the Panchayat had prepared a disaster management plan involving the people of the Panchayat. So in the background of the 2018 and 19 floods. So I'm requesting Mr. Suresh Muttathil to kindly explain how this has, encouraged or helped to mitigate further issues in the wake of a future environmental problem. Future disasters mitigate ചെയ്യുന്നതിന് ഈ പ്ലാനിംഗ് എങ്ങനെ പഞ്ചായത്തിനെ സഹായിക്കുന്നു, എങ്ങനെ അവിടുത്തെ ജനങ്ങളെ സഹായിക്കുന്നു എന്ന്. വേദിയിലും സദസ്സിലുമിരിക്കുന്ന എല്ലാ സുമനസ്സുകൾക്കും നമസ്കാരം. എറണാകുളം ജില്ലയിലെ കടുങ്ങല്ലൂർ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് എന്നാണ് ഞങ്ങളുടെ പേര്.
18.06 ചതുരശ്ര കിലോമീറ്റർ ദൈർഘ്യമുണ്ട് ഈ പഞ്ചായത്തിന്. 45,000-ഓളം ജനസംഖ്യ ഈ പഞ്ചായത്തിലുണ്ട്. ആലുവ പെരിയാറിനാൽ ചുറ്റപ്പെട്ട് കിടക്കുന്ന ഒരു പ്രദേശമാണ്. 2018 പ്രളയം പഞ്ചായത്തിലെ 21 വാർഡുകളിൽ 20 വാർഡുകളെ പൂർണ്ണമായിട്ടും വെള്ളത്തിൽ മുക്കിയ പഞ്ചായത്താണ്. 36 വീടുകൾ പൂർണ്ണമായിട്ടും പഞ്ചായത്തിൽ തകരുകയുണ്ടായി. ഒരാൾ മരണപ്പെടുകയുണ്ടായി. 3000 വീടുകൾ ഭാഗികമായിട്ട് കേടുപാടുകൾ സംഭവിച്ചു. 3201 വളർത്തുമൃഗങ്ങൾ മരണപ്പെടുകയുണ്ടായി. ഏതാണ്ട് 20,000-ഓളം താറാവുകളും കോഴികളും ഒക്കെ ചത്തു. ജനങ്ങളുടെ സകല സമ്പാദ്യങ്ങളും ഒക്കെ നഷ്ടപ്പെട്ട ഒരവസ്ഥയായിരുന്നു കടുങ്ങല്ലൂർ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിൽ 2018. തുടർന്ന് 2019 അതിവർഷവും ഒട്ടനവധി പ്രതിസന്ധികളും പ്രശ്നങ്ങളും സൃഷ്ടിച്ചു എന്നുള്ളതൊരു യാഥാർത്ഥ്യമാണ്. ഞങ്ങളുടെ പഞ്ചായത്തിലെ ദുരന്ത നിവാരണ പ്രവർത്തനങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് വലിയൊരു മാറ്റമുണ്ടാക്കുവാൻ കഴിഞ്ഞത് ബഹുമാനപ്പെട്ട കേരള സർക്കാരിൻ്റെ 14ാം നിയമസഭയുടെ 16ാം സമ്മേളനത്തിലെ ചട്ടം 300 അനുസരിച്ച് ബഹുമാനപ്പെട്ട കേരള മുഖ്യമന്ത്രി ശ്രീ പിണറായി വിജയൻ നിയമസഭയിൽ നടത്തിയ പ്രസ്താവനയെ നെഞ്ചിലേറ്റിയാണ് ഭരണ പ്രതിപക്ഷ ഭേദമന്യേ എല്ലാവരും നമ്മൾ നമുക്കായി എന്ന ബഹുജന ക്യാമ്പയിന് തുടക്കം കുറിച്ചു. നേരിട്ട ദുരന്തങ്ങൾ എല്ലാം വെല്ലുവിളിയായി തന്നെയാണ് ഞങ്ങൾ ഏറ്റെടുത്തിട്ടുള്ളത്. കേരളത്തെ പുനഃസൃഷ്ടിക്കുന്നതിനുള്ള റീബിൽഡ് കേരള ഡെവലപ്മെൻറ്റ് പ്രോഗ്രാം സംവിധാനത്തെ ജനപങ്കാളിത്തത്തോടെ സാധ്യമാക്കണം. അതിനുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങളാണ് ഞങ്ങൾ ഏറ്റെടുത്തത്. പ്രാദേശിക സർക്കാരുകളുടെ നേതൃത്വത്തിൽ ദുരന്ത നിവാരണ സംവിധാനങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കണം. ദുരന്ത നിവാരണ ആസൂത്രണ രേഖ തയ്യാറാക്കണം. ഇതിനായി ആവശ്യമായ പരിശീലനങ്ങൾ നൽകുന്നതിനായി സർക്കാർ കിലയെ ചുമതലപ്പെടുത്തുകയും കേരള ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് ലോക്കൽ അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ എല്ലാ ജില്ലകളിലും പരിശീലനങ്ങളും ആസൂത്രണ രേഖ തയ്യാറാക്കാൻ ആവശ്യമായ ടെംപ്ലേറ്റുകളും നൽകി. കടുങ്ങല്ലൂർ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിൽ 2020 ജനുവരി 31, ഫെബ്രുവരി 1 തീയതികളിൽ പഞ്ചായത്തിലെ 21 വാർഡുകളിൽ നിന്നും സന്നദ്ധ പ്രവർത്തകരായ 250 പേരെ വിളിച്ചു ചേർത്ത് 2 ദിവസങ്ങളിലായി നടത്തിയ ശില്പശാലയിലാണ് ഞങ്ങളുടെ പദ്ധതികൾ ആസൂത്രണം ചെയ്തത്. തുടർന്ന് എല്ലാ വാർഡുകളിലും എല്ലാ വിഭാഗം ജനങ്ങളെയും കോർത്തിണക്കിക്കൊണ്ട് വാർഡ് തല ഫോക്കസ് ഗ്രൂപ്പ് ചർച്ചകളും അതോടൊപ്പം തന്നെ വാർഡ് തല ഗ്രാമസഭകളും വിളിച്ചു ചേർത്ത് ഞങ്ങൾ അതിൻ്റെ പ്രവർത്തനങ്ങളുമായിട്ട് മുന്നോട്ട് പോയി. പരിശീലനങ്ങളിൽ ജനങ്ങളുടെ വലിയ പങ്കാളിത്തവും പ്രതികരണവുമാണ് ഭരണസമിതിക്ക് ഉണ്ടായത്. തീർച്ചയായിട്ടും ഒരു പഞ്ചായത്തിലെ മുഴുവൻ പ്രദേശങ്ങളെയും ബാധിച്ച ഒരു പ്രളയം എന്നുള്ള നിലയിൽ സമീപകാല ഭാവിയിൽ ഇത്തരത്തിലൊരു പ്രളയം വന്നാൽ എങ്ങനെ അതിൽ നിന്ന് കരകയറാം എന്നുള്ളതിനെ സംബന്ധിച്ച് ജനങ്ങളുടെ ഭാഗത്തുനിന്ന് വളരെയധികം താല്പര്യത്തോടു കൂടിയാണ് ഞങ്ങളുടെ പ്രവർത്തനങ്ങളെ എല്ലാ വിഭാഗം ജനങ്ങളും സഹായിച്ചത്. തുടർന്ന് വാർഡ് തലത്തിലുള്ള ദുരന്ത നിവാരണ സമിതികൾ രൂപീകരിച്ചു. നമ്മൾ നമുക്കായി എന്ന ക്യാമ്പയിൻ സന്ദേശം 2000 പേരിലേക്ക് ഞങ്ങൾ എത്തിച്ചു. 20 വാർഡുകളിൽ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഏതാണ്ട് ഞങ്ങൾ 8 ERT അംഗങ്ങൾ, എമർജൻസി റെസ്പോൺസ് ടീം അംഗങ്ങൾ 8 പേർക്ക് നേതൃത്വത്തിൽ ഒരു ടീമിൽ 10 പേര് വെച്ച് 80 പേര് ഒരു വാർഡിൽ, അങ്ങനെ 20 വാർഡുകളിലായിട്ട് 2000-ഓളം ആളുകൾ ഞങ്ങളുടെ ഈ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് താങ്ങും തണലുമായിട്ട് പഞ്ചായത്തിനോടൊപ്പം നിന്നു. അങ്ങനെ എല്ലാ വാർഡുകളിലും ഞങ്ങൾ പരിശീലനങ്ങൾ സംഘടിപ്പിച്ചു. ദുരന്തത്തെ നേരിടാൻ ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ഭാവി പരിപാടികൾ ആസൂത്രണം ചെയ്തു. ഒട്ടനവധി പ്രൊജക്റ്റുകൾ ഞങ്ങൾ ആസൂത്രണം ചെയ്തു. ഞങ്ങളൊരു ദുരന്ത നിവാരണ പദ്ധതി രേഖയ്ക്ക്
ഞങ്ങൾ രൂപം കൊടുത്തു. ആ രൂപരേഖയാണ് കേരള സംസ്ഥാനത്തിൽ നമ്പർ 1 ആയിട്ട് സർക്കാർ തിരഞ്ഞെടുത്തത്. ഒട്ടനവധി പദ്ധതികൾ നമ്മൾ ആവിഷ്കരിച്ച് നടപ്പാക്കാനുള്ള തയ്യാറെടുപ്പിലാണ്. ദൗർഭാഗ്യവശാൽ 2019 കോവിഡ് മഹാമാരി മൂലം പ്രവർത്തനങ്ങൾ അല്പം മന്ദഗതിയിലായിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ളതൊരു സത്യാവസ്ഥയാണ്. തീർച്ചയായിട്ടും ദുരന്തം വന്നാൽ അതിനെ അഭിമുഖീകരിക്കാനുള്ള എല്ലാ തയ്യാറെടുപ്പുകളും പഞ്ചായത്ത് ഏറ്റെടുത്ത് നടത്തുന്നതിന് പ്രാപ്തരാകും. നന്ദി, നമസ്കാരം. Thank you, Sri Suresh Muttathil, President Kadangallur Grama Panchayat. So as he mentioned, the Panchayat, this was one area which was, totally submerged in the 2018 floods when the Periyar River breached its boundaries. 20 wards were submerged in water loss, and the disaster, the magnitude of the disaster was so huge. So as he mentioned, the Panchayat, has gained the expertise to prepare disaster management plan. The state government facilitated, KILA provided training to the Panchayats across the state as to how to prepare disaster management plans. And with the active participation of the people, volunteers, people from the Panchayat, they all joined in, discussions and focus group meetings, and the disaster management plan was prepared. So congratulations that your, disaster management plan and Pathati Rekha has been adjudged as the best one in the state. So all the other panchayats of the state have also prepared similar plans. And again, last year in 2020-21, when COVID pandemic struck the whole country, our panchayats were again empowered to prepare plans, to organize volunteers, to provide help to people in need, people who were in quarantine and others. So disaster mein kaise panchayats, local bodies ka active participation, active involvement kaise hoga, kaise karenge, uske liye state से भी, किला से भी वो ट्रेनिंग मटेरियल प्रिपेयर किया, गाइडलाइंस प्रिपेयर किया. सो पंचायत्स आर ready to, take the lead if such disasters strike in future also. So that is the kind of empowerment, resilience that other panchayats, other local bodies across the country also need to develop and need to build up. Other 3 presentations were basically on MNREGs and convergence with other livelihood schemes and other poverty eradication schemes. So the sarpanchas were able to explain how the magnitude of the impact in Orissa. They could, put a stop or reduce the level of migration that had been happening in their panchayat earlier. बहुत लोग बाहर जॉब के लिए जा रहे थे, अभी तो वो नहीं होता है. रिवर्स माइग्रेशन शुरू हुआ है. कल भी एक पंचायत प्रेसिडेंट महाराष्ट्र से बताया कि कैसे रिवर्स माइग्रेशन MNREGs और लाइवलीहुड प्रोग्राम से हुआ. आंध्र प्रदेश में भी, उनके पंचायत में भी बहुत सारे इम्पैक्ट हो गया. Himachal is also doing a lot of convergence with Government of India schemes and state government schemes, so that there is a definite boost to the economic upliftment of the panchayats of the local bodies. So now we go to the next round of video presentations. Can the next 3 presentations be uploaded? In India, around 22% people falls under the BPL category. In Jharkhand, the condition is worse, where around 41% of the people are poor. The COVID pandemic pushed many people into the poverty trap. Several are even deprived of 1 square meal. In multi-poverty index too, it's in 2nd position from below. However, the Constitution of India commits to ensure economic and social justice to all its citizens. To ensure that it has formulated many acts and schemes, for instance, Manrega, NFSA and NSAP.
On the other hand, there are still many people who are deprived of their basic rights and entitlements due to various reasons, including lack of information in the vulnerable section of the society and inaccuracy in their documents. It also empowers Gram Panchayats as local self-governments for deepening democracy. Ensuring economic development and social justice are two of the major roles of local self-government. Similarly, community-based institutions' role in it has also been acknowledged by many state governments, including Jharkhand. Since last few years, the local self-government have been facilitated by central and state governments to work around this. It also has been witnessed that the Gram Panchayats have been empowered and have started focusing on ensuring rights and entitlements to its citizens. The issues of ration, pension and Manrega have been redressed in collaborative efforts of Gram Panchayats, community-based institutions, local administration and civil society organizations like Pradhan. This relationship was further strengthened during the pandemic. This is a story of a family that lives in Borwa village of Chandana Panchayat of Sundar Pahadi block. Babuji Hansda and his wife were deprived of getting ration and handicap pension. Similarly, his mother was deprived of old age pension, sister-in-law of widow pension, as well as ration. They had been trying to get the benefit for ages. Sometimes their application got rejected as they did not have handicap certificates, and sometimes those have been rejected due to not having proper documents. Nagrik Sahayata Kendra, Sundar Pahadi came forward to support them. Now they have been receiving pensions and ration. नागरिक सहायता केंद्र हमारा ब्लॉक स्तर पर है और पंचायत स्तर में हेल्प डेस्क के रूप में वो लोग काम करते हैं जो GPHD हैं। तो इनका यही काम है कि VO और पंचायत के साथ तालमेल बनाना और उनसे संबंधित जो भी आते हैं शिकायत हो या आवेदन उनको लें और संबंधित जनप्रतिनिधि को जानकारी करते हुए फिर वो आगे कार्रवाई करेंगे। Today, the Gram Panchayat Help Desk and NSKs have been proved as blessings for the ultra-poor household of the state. At present, there is a total of 93 GPHDs and 80 NSKs actively engaged. Most of the problems have been sorted out at Panchayat level and unresolved issues have been forwarded to NSKs. They generate awareness, help citizens in preparation of applications from enrollment as well as grievances. They participate in Gram Panchayat Coordination Committee meetings at GP level and block level coordination meeting at block level. Consequently, the Rozgar Divas have been regularized and the flagship programs of the government have been reaching to people easily. That was a video presentation on the need for social protection for elevating poverty from rural areas by an NGO. So next we have a video film on the risk-informed GPSP, a video presentation from UNICEF. India is prone to multi-disasters and Bihar is one of the states that faces it the most. The geographical composition of Bihar makes it vulnerable to multiple disasters. The disaster-prone areas are inhabited by people from marginalized sections like Mahadalits, which account for 16% of the total population. Each disaster adds to their existing vulnerability and pushes them deeper into poverty. UNICEF's Disaster Risk Reduction Program in Bihar has been addressing disaster risk and vulnerabilities using knowledge and fortitude of communities and resources from government schemes and programs. The model prioritizes mobilization and organization of at-risk men, women, and children for participatory DRR planning, addressing disaster risk and vulnerabilities, facilitating development of risk-aware development plans
that feeds into the Gram Panchayat plans via Gram Sabha and DRR plans implemented using the resources from government programs and schemes. अब हम लोगों को आपदा का समस्या का जानकारी हो गई है, अब हम लोग जागरूक हो गए हैं. There are 7 interrelated steps to achieve the goal of resilience. Following the roadmap exemplifies the step-by-step process of CBDRR. At-risk community is mobilized and organized in the form of an institution named Village Disaster Management Committee at the village level. And their capacity is built to undertake their own planning for reducing disaster risks and working in coordination with the Panchayati Raj institution. UNICEF supports these committees to acquire necessary knowledge, perspective and skills to identify disaster risks, underlying risks, developmental gaps and to map them out through a collaborative process. UNICEF organizes trainings, orientations of PRI members and frontline government functionaries of health, ICDS, PRI, PHED to build understanding on risk-aware planning. This helps in facilitating fund leverage from government programs and schemes, as well as helps in bonding all to work on DRR. DRR plans are discussed in the ward sabhas and get their approval before submission in Gram Sabha. VDMC leaders present DRR plans in Gram Sabha for wider discussion and approval. After lots of discussion, Gram Sabha approves the plan. DRR plan is implemented by leveraging funds from different schemes of the government, and we also generate contribution from the community. In India, it is easy to do risk reduction as there are a large number of government schemes that go down up to the village level. These schemes can be adapted to address disaster risk. हमारा घर बहुत गहरा था, तो बाढ़ के पानी आता था तो घर में घुस जाता था. जब से मिट्टी भराया, अब नई बाढ़ का पानी आता है, न घर में घुसता. हम लोग के यहाँ जब बाढ़ आती थी ना कमला नदी का, हम लोग को बहुत तकलीफें उठाना पड़ता था. यहाँ तक समस्या था जो हम लोग आपस में यानी गांव का जो महिला थी ना, वह डिलीवरी के लिए जब अस्पताल ले जाते थे तो अस्पताल तक नहीं पहुँचती थी. लेकिन अब हम लोग खुश हैं जो यह पुल बना. VDMC organizes open village meetings once every 3 months to review the progress and organizes annual reviews and planning meetings every year in the month of September to revise the village DRR plan. Block level review meeting is held monthly in the block office under the chairmanship of BDO and CO to review the progress of CBDRR and facilitate fund leverage. The meeting is participated by leaders of all the VDMCs, DRR catalysts and all the block level functionaries of various line departments. Without appropriate risk-informed development planning and awareness for reducing risk, the development gains can't be sustainable. This program has created a sense of empowerment, safety and responsibility among the community people and the students. Next, we have a video presentation on skill development schemes presented by the Ministry of Skill Development, Government of India. आजादी के बाद युवाओं को स्किल्ड कर रोजगार परक बनाने के लिए माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय का गठन किया था और वर्ष 2015 में स्किल इंडिया मिशन की शुरुआत की गई थी. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विजन को ध्यान में रखते हुए कौशल विकास एवं उद्यमशीलता मंत्रालय लगातार नई चीजों का समावेश कर रहा है, जिससे देश में स्किल ट्रेनिंग को स्पीड, क्वालिटी और कैपेसिटी मिली है और 5 करोड़ से अधिक नई स्किल्ड वर्कफोर्स के साथ देश $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी के लिए आत्मनिर्भर बनने की राह पर अग्रसर है. मंत्रालय की देखरेख में इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट ITI की कायाकल्प की जा रही है, जहां आजादी के बाद से 2014 तक
10,119 ITI थे, वहीं बीते 7 वर्षों में शुरू किए 4,621 नए ITI के साथ कुल 14,740 ITI में 24 लाख से अधिक विद्यार्थी स्किल ट्रेनिंग ले रहे हैं। कौशल विकास के जन अभियान में प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के तहत अब तक 1.37 करोड़ से अधिक लोगों को स्किल्ड बनाया जा चुका है। बीते 7 वर्षों में 28 राज्यों एवं 8 केंद्र शासित प्रदेशों के 707 जिलों में 719 प्रधानमंत्री कौशल केंद्रों की स्थापना की जा चुकी है, जिसके जरिए 36 सेक्टरों के विभिन्न जॉब रोल में कुशल बनकर देश को आत्मनिर्भर बनाने का काम कर रहे हैं। कोविड-19 की चुनौतियों से बेहतर ढंग से निपटने के लिए अब तक 1.24 लाख कोविड वॉरियर्स को कस्टमाइज्ड क्रैश कोर्स की ट्रेनिंग दी जा चुकी है। देश के असंगठित क्षेत्र के पारंपरिक कौशल और अनौपचारिक उद्यमी को रिकॉग्निशन ऑफ प्रायर लर्निंग (RPL) के तहत मान्यता दी जा रही है, जिससे असंगठित क्षेत्र को संगठित अर्थव्यवस्था में बदला जा सके। राकेश जैसे हजारों युवा RPL का फायदा उठाकर अपने हुनर को सर्टिफाई कर पहचान दे रहे हैं। नई शिक्षा नीति 2020 के तहत बच्चों को स्कूली स्तर पर वोकेशनल एजुकेशन से जोड़ा जा रहा है और जिला स्तर पर स्किल हब बनाए जा रहे हैं। इससे युवाओं को स्कूल में ही कौशल प्रशिक्षण देकर भविष्य के लिए रोजगार परक बनाया जाएगा। भारत सरकार ने अप्रेंटिसशिप स्कीम में बदलाव कर इंडस्ट्री और यूथ फ्रेंडली बनाया है। 38,000 से अधिक इंडस्ट्रीज में अप्रेंटिसशिप के जरिए 22 लाख से अधिक युवाओं को ऑन फ्लोर ट्रेनिंग दी गई है। हर महीने के दूसरे सोमवार को प्रधानमंत्री नेशनल अप्रेंटिसशिप मेले का आयोजन किया जा रहा है। इससे युवाओं के जीवन में अभूतपूर्व बदलाव आ रहा है। ग्रामीण भारत को सशक्त बनाने के लिए 298 जिलों में 304 जन शिक्षण संस्थान चलाए जा रहे हैं। 7 वर्षों में 27.12 लाख लोगों को स्किल ट्रेनिंग दी गई है, जिसमें 85% महिलाएं हैं। वर्ल्ड बैंक के सहयोग से चल रहे संकल्प योजना के तहत जिला स्तरीय स्थानीय प्रशासन को सशक्त बनाया जा रहा है। महात्मा गांधी नेशनल फेलोशिप और DSDP के जरिए स्किल को निखारा जा रहा है। स्किल इंडिया मिशन के तहत समाज के पिछड़े, दलित, आदिवासी, थर्ड जेंडर और प्रवासियों को कौशल प्रशिक्षण देकर सशक्त बनाया जा रहा है, जिससे उन्हें आजीविका का साधन उपलब्ध हो सके। उद्यमशीलता बढ़ाने के लिए मंत्रालय द्वारा विशेष तौर पर इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप और निस्बत जैसे इंस्टीट्यूशंस चलाए जा रहे हैं। मुद्रा योजना और PM स्वनिधि योजना का लाभ लेकर युवा सूक्ष्म और लघु उद्यमी बन रहे हैं। IIT और IIM के तर्ज पर इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ स्किल्स की स्थापना की जा रही है, जबकि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर स्किल्ड लोगों की पूर्ति के लिए स्किल इंडिया इंटरनेशनल सेंटर्स की शुरुआत भी की गई है। कुशल कार्यबल की क्षमता निर्माण के लिए सिंगापुर, UAE, जापान, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया जैसे देशों में कौशल विकास पर काम करने वाले समकक्षों के साथ मिलकर काम कर रहे हैं। स्किल इंडिया मिशन अपने आप में एक विशिष्ट मिशन है, जो प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के विजन के अनुरूप कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय भारत को दुनिया का स्किल कैपिटल बनाने की दिशा में काम कर रहा है। इसके लिए हमारे विशाल कार्यबल को विश्व भर में कौशल आधारित अवसरों से जोड़ा जा रहा है। MSDE समाज के सभी तबके के लोगों को कौशल प्रशिक्षण से सशक्त बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। Yeah, so those were 3 presentations from the NGO Sugandh Sarkar Pradhan, then from UNICEF and from the National Skill Development Mission. So the presentation from the NGO Sugandh Sarkar Pradhan was, reiterating what the Panchayat presidents had mentioned in their presentations earlier as to how, there should be, the convergences between MNREGs and the livelihood generation programs,
the convergence between MNREGS and the skill development programs would all, contribute to ensuring reduction of poverty and economic upliftment of the respective areas. So we have the representative from the NGO who can throw further light on that. Yeah. Yeah. So, first of all, on behalf of Pradhan, I must thank Ministry of Panchayati Raj and also Government of Kerala from the CSO fraternity for giving us this opportunity to be a participant in this workshop. So this model, I think you have seen the kind of remoteness Jharkhand has, and especially the people from marginalized, they are hardly able to access to the block. So that has actually helped, that actually make them very vulnerable to access these schemes. So seeing this kind of situation, we have tried to come up with a model. We are making this model as the ease of doing welfare. As we are saying, ease of doing business. It's how we can make welfare more reaching to the vulnerables. So it's a model based on the collaboration between Gram Panchayat and the CBOs, the SDG federations. And if you see some of the outcomes that this model has come up with, we have made a third-party evaluation of this model. The out-of-pocket expenses for the citizens for accessing any welfare schemes has come down from 434 to 56 rupees, because they don't have to go to the block. Lot of middlemen, they used to cheat these kind of people. So that come as a reduced. Similarly, the time from application to realization has come down within a span of 3 to 7 months, which was earlier it was timeless. They have made applications several times, they don't have any clue out of that. These are the two significant from a citizen's perspective. The perspective from the Gram Panchayat, as you know, in Jharkhand, Gram Panchayat is at a very nascent stage. The citizens' perception about Gram Panchayat is not very strong. So these model has helped the Gram Panchayat to reach to the people in a very time-bound and very targeted manner. So this has helped the citizens to have a more positive perception about the Gram Panchayat. So Gram Panchayat's efficiency of doing service, giving service delivery in a time-bound manner has been increased. And a good outcome of this that PRI, CBO, CSOs and administration has come together to work in tandem, in hand. And because of this, lot of things after that is happening, and it's a very good collaborations come out with the block administration, NGOs, and the GPs and the SDG federations. And third is that it's a kind of a single window kind of at the Gram Panchayat where people are getting information at the right time. The complexity of the documentation process has been reduced, and the time for getting access has also been reduced. Yeah. So these are the kind of outcome, and now it is happening in 93 GPs in Jharkhand, and now we are in collaboration with the Gram Panchayat, in the Department of Panchayati Raj, we are making it across states. So these are the kind of things that has come out. Yeah, thank you. Thank you, Sri Sukanda Sarkar. So the takeaway from this is how to bring about this ease of doing welfare. So maybe when we draw the yardsticks, the timelines for service delivery, for getting the benefits of various schemes, panchayats would also be able to judge as to how effective and how efficient their service delivery is. Now we have Sri Mandar Vaidya from UNICEF, who would be explaining further about the risk-informed GPSPs. So basically, when the panchayats, when the local bodies are enabled and empowered to, map their disaster risks, their vulnerable spots, their vulnerable areas, they would be able to better plan how to efficiently use and effectively use the resources available with them for managing disasters. So, Mr. Vaidya, please. All the esteemed personalities on dais and all the delegates representing here. I have 6 points in response. Can you be quick?
because we are running slightly late. Only 6 points which are which I want to express. One is that risk-informed GPDP is an integration of existing development programs with disaster management measures. So many a times it is seen that disaster management is something specialized. When I was listening to Kerala presentation as well, disaster management is not a specialized thing. And we at UNICEF strongly believe that participation is the key for ensuring integration of disaster management measures with GPDP. If we read through SDGs, SDGs का जब हम interpretation करने की कोशिश करते हैं, then we understand that every SDG is related with disaster risk reduction. And we can actually utilize existing or leverage existing funds for disaster risk reduction. One key point which was presented in the video is that disaster risk reduction or risk-informed GPDP is a step-by-step process. It can't happen as an exercise, and that we are emphasizing. And step-by-step process actually bringing frontline workers together who are involved with ICDS, water sanitation, Swachh Bharat mission, and help them to look at the existing risks of the most vulnerable people and adapt very small micro-level actions which may help in reducing risk. For example, in Bihar, we have task forces, women's task forces, who actually go door by door and ensure that every child is monitored by ICDS center. So that's how simple action by community also reduces the risk at a larger level. Task forces, role clarity is very important, and that is where I think many of the processes are struggling. And not only role clarity, but also their contribution. One of the very good example in Bihar is that in Bihar, to deal with the impact of heat, extreme temperatures which result into domestic kind of fires, we have got a notification that what time chula should be burnt and what time it should be totally closed at the extreme temperature time, and task forces do monitor it very strong, helped in reducing events of last point is that about future. We have actually achieved certain things in disaster risk reduction and integrating plans with Gram Panchayat plans, disaster management plans with Gram Panchayat plans, but the challenges of climate stresses and shocks, which are unforeseen and they are increasing. They are very frequent. Like for example, in North Bihar now we are facing depletion of groundwater, which was not the reality at once. And if we look at entire nation, we'll find that new areas are coming under new stress, climate stresses and shocks. So we need to take a step further where people will be motivated to take climate actions, and Gram Panchayat plans also become climate sensitives along with risk-informed plans. In conclusion, localizing SDGs will help a lot in making our Gram Panchayat resilient. That's it. Thank you very much. Yeah, thank you very much. So I think we, at the government level also, we also may need to invest more in, leveraging, enabling panchayats to leverage technology, also in, utilizing or developing new technology for constructing earthquake-resistant houses, earthquake-resistant roads, flood-resistant roads, etc. So we need to go forward on that. Now, on the skilling presentation,